Hello students, welcome to my channel and we have discussed types of colloids and that were aerosol, right? Foam, solid foam, emulsion, solid sol and gel, right? And we have discussed dispersed phase and dispersion medium. What is the medium? Medium in which the main solvent and dispersed phase you can consider it as a solute, correct? So these are type of colloids. Now we are discussing the effects of the colloids and different effects, basically When a Tyndall fine effect. beam of light is passed through a colloidal solution placed in a dark place, then the path of the beam gets illuminated. आप किसी कोलोइडल सोल्यूशन पे एक लाइट पास कर रहे हैं, सपोज करो इसको क्या होगा, एक तरह की स्कैटरिंग होगी, क्योंकि अगर कोलोइडल सोल्यूशन हुआ मतलब अगर किसी तरह कोलोइडल सोल्यूशन हुआ, कोई जेल हुआ, कोई फोम हुआ, किसी भी तरह कोलोइड हुआ, अगर उसमें आपने लाइट पास की तो इफेक्ट क्या होगा, पार्टिकल्स क्या होंगे, स्कैटरिंग होगी। लाइट की स्कैटरिंग जहां हो रही होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट। एक टर्म है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। illuminated path of the beam is called the Tyndall cone. This phenomenon of the scattering of light is called the Tyndall effect. The Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. This happens due to the scattering of light by the particles of dust and smoke in the air. When sunlight passes through the canopy of trees in a forest, you can see the Tyndall effect at work again. In the forest, mist contains tiny droplets of water, which act as particles of colloid dispersed in air. In solutions, the particle size is 10 angstroms. In colloids, the particle size ranges from. Note down this entire comparison of solution, suspension and colloids. There is difference, right? What is solution, colloids and suspension? Here is the property, these are the properties. हम लोग क्या बात करेंगे कि solution की particle size क्या होगा, colloid का particle size क्या होगा और suspension particle size क्या होगा ना। तो properties हमें इन पे बात करनी है कि property क्या होंगे, हम पार्टिकल साइज की बात करेंगे, विजिबिलिटी की बात करेंगे, इन तीनों की, सोल्यूशन की, कोलॉइड की, सस्पेंशन की, और टिंडल इफेक्ट कैसा होगा और टाइप ऑफ मिक्सचर कैसा है। सबसे इंटरेस्टिंग है, सोल्यूशन हमेशा होमोजीनियस होते हैं जबकि कोलॉइड्स और सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाए जाते हैं, ठीक है ना। टिंडल इफेक्ट कहाँ ऑब्जर्व होगा कहाँ नहीं ऑब्जर्व होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो सोल्यूशन हो गया, जो होमोजीनियस होगा, पूरी तरह से मिक्सड हो गया, वहाँ पर टिंडल इफेक्ट नहीं दिखा, यानी वहाँ पर लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी, लेकिन कोलॉइड में प्रॉपरली होगी, सस्पेंशन में ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा। तो हमें इस प्रॉपर्टी को प्रॉपरली देखना है, ध्यान से देखें, ये आपको नोट करना है होमवर्क में। 10 angstroms to 2000 angstroms, while the particle size is greater than 2000 angstroms in suspensions. The particles are invisible in solutions, while the particles are visible in colloids and suspensions. Particles in solutions and colloids pass through filter paper easily, while the particles in suspensions do not pass through filter paper easily. The Tyndall effect is not observed in solutions and suspensions, while it can be seen in colloids. A solution is a homogeneous mixture, while both suspensions and colloids are heterogeneous mixtures. Now, Hi. My name is Blob. I'm just about to make a cup of coffee for myself while we chat. Oops. I must have added salt instead of sugar. Let me try to remove the salt from the cup. Now, I'm in a mess. I wonder how you separate a solid from a liquid, or even a liquid from a mixture of liquids. Any ideas? This lesson is about the different methods that can be used for separating the components of a mixture. By the end of this lesson, you will be able to. अब टॉपिक है कि कैसे हमें मिक्सचर से सेपरेट करना है दो चीज़ों को अलग अलग, राइट। अगर कोई सोल्यूशन बन चुका है, सपोज करें अगर हमारे पास कोई शुगर सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन से आपको शुगर अलग करनी है
और वाटर अलग करना है, आपको सेपरेट करना है, तो आप क्या करेंगे? Very easy. You just have to heat the solution. As you heat the solution, vapor gets evaporized and you get the crystals of sugar, right? बट ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता. अगर बहुत से ऐसे हमारे पास सोल्यूशंस होते हैं जिसमें आप सेपरेशन नहीं कर पाते हैं, तो सर लेकिन हर एक टाइप के सोल्यूशन या मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए हमारे पास अच्छी अच्छी टेक्निक्स होती हैं. यहाँ हम कैसे करेंगे, हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? वी हैव टू आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ गिवन मिक्सचर यूजिंग. हमारे पास कुछ मेथड्स हैं सेपरेशंस के, इनका इस्तेमाल करेंगे, जो कि डिस्कशन अभी होगा इसी में. Identify the most appropriate method of separation of a given mixture using magnets, evaporation, filtration, centrifugation, a separating funnel, sublimation, chromatography, distillation, and crystallization. Note down all these separation methods. This is your classwork. If you are asked how can you separate two kinds of mixtures, different kinds of mixtures, name the separation methods, so then you can answer with the help of magnets, evaporation, filtration, centrifugation, separating funnel, sublimation, chromatography, distillation and crystallization. आप इसे प्रॉपरली समझोगे, मैग्नेट्स को भी समझ जाओगे. एवेपोरेशन यू नो वेल, फिल्ट्रेशन यू नो वेल, यू डोंट नो सेंट्रीफ्यूगेशन, you don't know separating funnel, you may be knowing sublimation, but you definitely don't know chromatography and crystallization. Okay, so this is the topic of discussion right now, taking one by one. You may come across several types of mixtures in daily life as well as in the laboratory. Mixtures can be classified on the basis of their physical states. Note down. Solid mixture. Metal alloys are actually solutions of solids in solids. For example, brass is a solution of zinc in copper. जिसे आप कहते हैं सॉलिड मिक्सचर, सबसे अच्छा एग्जांपल होता है एलॉय, जिसको आप देखते हो एलॉय व्हील. जो आज आपकी कार्स और बाइक्स में जो व्हील लगे हैं वो सब क्या है? एलॉय व्हील. जब भी हम टर्म लेते हैं एलॉय, एलॉय मीन्स होता है मेटल प्लस मेटल. metal plus metal, these are being dissolved into one another, right, just like one. इनको ऐसा मिक्सिंग की गई है मेल्ट करके कि वो बिल्कुल एक हो गए हैं. और मेटल जो एलॉय होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है किसी इंडिविजुअल मेटल से. एक अकेला मेटल उससे बहुत स्ट्रांग होता है एलॉय मेटल. और याद रखेंगे, जब एलॉय होता है, एलॉय बनाने के बाद इसका जो वेट हो जाता है इंडिविजुअल मेटल से भी हल्का हो जाता है और स्ट्रांग होता है, रस्ट प्रूफ होता है. इसमें रस्टिंग नहीं होती, मतलब कोरोजन नहीं होगा. तो याद रखें कि जब भी हम बात करेंगे सॉलिड मिक्सचर का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है एलॉय. एलॉय क्या होता है? मेटल का एक तरह का सोल्यूशन पार्ट होता है. ओके. Solid liquid mixture. A sugar or salt solution is an example of a solution of solid in a liquid. Liquid mixture. Alcohol in water is a liquid in liquid mixture. Liquid gas mixture. For example, carbon dioxide mixed in water. Gas mixture. Air forms a gas in gas mixture as it is a solution of gases like oxygen, argon, nitrogen and carbon dioxide. If you are provided with a sample of a mixture and asked to separate the constituents, सबसे इंटरेस्टिंग है गैस मिक्सचर, जो कि आपका एटमॉस्फेयर है. आप कहोगे एटमॉस्फेयर मिक्सचर कैसे? बिल्कुल है, एक तरह का एटमॉस्फेयर क्या है? सोल्यूशन टाइप में है. आप कंफ्यूज मत होना कि सोल्यूशन क्या है, मिक्सचर क्या है. कोई भी मिक्सचर सोल्यूशन कैसे कह सकते हो आप, है ना? या कोई भी सोल्यूशन मिक्सचर कैसे कह सकते हो? हाँ, सोल्यूशन को मिक्सचर डेफिनेटली कह सकते हैं, है ना? तो देखो, गैस एक तरह का सोल्यूशन हुआ जिसमें नाइट्रोजन आपका मेन कंटेंट हुआ. जो आपका एटमॉस्फेयर में गैस है उसमें नाइट्रोजन 78% हुआ. 78% अगर नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन हुआ कितना? 21%.
तो एक बात तो क्लियर हो गई, जिसका अमाउंट ज़्यादा है वही आपका सॉल्वेंट हुआ। याद रखेंगे जब भी हम कोई सोल्यूशन बनाते हैं उसमें एक होता है सॉल्वेंट, बाकी होता है सॉल्यूट। तो जो जिसका अमाउंट ज़्यादा है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, वो क्या कहलाएगा, समझ गए, वो हो गया सॉल्वेंट, और बाकी क्या हो गया सॉल्यूट। तो याद रखें, क्योंकि वो भाई एक तरह का ऐसा सोल्यूशन है होमोजीनियसली, होमोजीनियस है पूरा गैस का एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जितनी भी गैस हैं क्या होमोजीनियसली, पता नहीं चलता है कि एटमॉस्फेयर में कितनी गैसेस दिख रही हैं, दिखता तो है नहीं क्योंकि वो पूरी तरह से मिक्सड है। अब हम बात करें अलग अलग टाइप के मिक्सचर्स की। सॉलिड, सॉलिड देखा, अलॉय हो गया। सॉलिड लिक्विड मिक्सचर बहुत आसान है, आपने शुगर सोल्यूशन या शुगर सिरप बना लिया, वो भी क्या है, शुगर सॉलिड है, लिक्विड में वाटर है। लिक्विड, लिक्विड बहुत इजी है, लिक्विड में लिक्विड मिला सकते हो, लिक्विड लिक्विड तुम्हारा क्या हो जाएगा, आप एक तरह का मिक्सचर कह सकते हो, जैसे फैट और वाटर का भी हुआ है, और जैसे मिल्क हुआ जो कि एक तरह का सस्पेंशन भी कहा जाता है, इमल्शन कहा जाता है उसे, इमल्शन। और लिक्विड गैस मिक्सचर बहुत इंटरेस्टिंग है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में होते हैं जो बहुत तेज़ी से एफर्वेसेंस निकलते हैं। गैस, गैस एज यू नो वेल इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर तुम्हारा गैस और गैस मिक्सचर हुआ। You first need to figure out the type of the mixture. नाउ पहले हमें पता होना चाहिए मिक्सचर कैसा है, राइट, सॉलिड है Hey, क्या। that's so cool. Though I don't know why this happened. You can separate a mixture of sulfur and iron filings by passing a magnet over it. वेरी नाइस, The क्योंकि iron filings will get attracted to the magnet and will stick to it. You can use this method to separate a mixture in which one of the components is a magnetic material. Now I get it.